Amita ma'am is there, right? Yes, ma'am. Yeah. Morning, ma'am. Good morning, Amita. Francis sir को बोल देता हूँ, another 5 minutes he can join. हाँ मैम मैं बोल रही हूँ. Ma'am is joining in 2 minutes. Okay, that's fine. Once everything is ready, right? Okay, that's fine. Once everything is ready, right? Okay, that's fine. Who is streaming on YouTube? Who's doing? Sonia. Sonia is doing that. Okay. Yeah, that's fine, Sonia. It's the same link जो तुमने पहले शेयर किया था ना? चेंज तो नहीं हुआ? मैम चेंज हुआ है, उसमें ना एरर आ रही थी, लाइक टेक्निकल एरर यूट्यूब की साइड से, वो मैं लाइव दे ही नहीं रहा था, तो फिर मुझे अभी रिक्रिएट करना पड़ा. अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ये शेयर कर दूं ना सबके साथ. ठीक है.
So you are all set to come to college? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hopefully next talk we'll be having in the physical mode. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think Sir has joined. So, Dipanshi, we can. Yes, ma'am. Sir, can we start? Dipanshi, you can start now. Okay, ma'am. Miracles happen every day. Change your perception of what a miracle is, and you'll see them all around you. A very good morning to one and all present here. I, Dipanshi Sharma, on behalf of the Department of Mathematics, Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women, welcome all guests, faculty members, and participants to this talk under our talk series Abhigyan. The topic for today's talk is Balanced Calculations of Life. I'd like to extend my heartiest welcome to Mr. Vashist sir, who is our speaker for today. Sir is a first generation entrepreneur having an experience of 2+ decades. He has been appointed as undisputed president, Oberoi Curzon House, India's first high-end residential complex in civil lines. Sir is a member of Executive Committee for Welfare at Saraswati Bal Mandir, Aram Bagh and Harinagar. He has been a speaker and panelist at World Auto Forum event IVASS for 4 years in a row since 2017. He was also the speaker and panelist at World Auto Forum event CHRO Roundtable Conference. Sir played a key role of observer during jury rounds at 7th WAF Awards 2019 organized by World Auto Forum. He participated at 2nd Annual Indian Defence Conclave 2019. Sir participated at India-Korea Business Summit 2018, which was organized by Confederation of Indian Industry and Chosun Ilbo, South Korea's largest media group, in partnership with the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, where Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi addressed the summit. It's an honor to have you here today, sir. Now, I'd like to request Dr. Punita Saxena ma'am, teacher in charge of Mathematics Department, to welcome sir. Very good morning to all of you, and especially to Sir. We welcome you, Sir, on this talk. I mean, it's a very I'm sure the topic itself is interesting, and I'm sure the girls as well as we, the faculty members, are going to benefit a lot by when you share your experiences and you motivate the students also how to move further in life. And of course, calculations have to be balanced, be it life, be it an accounting ledger, or be it anything
So we welcome you, sir, for this talk. So I won't stand between you and students for long. So you can please start your talk. Yeah, very good morning to everybody. Today is a very special day, and I am really thankful to management of your college and all students who are part of this session today. I'm not a professional speaker, but yes, whatever I learned in my life, I think I should share with others. And people, call me for certain occasions to share my experience, what I have learned in my life. So I'm very happy to share my thoughts, my ideas, my calculation, where I have reached in my life. I have achieved few of my goals in life. So I'm sharing you all those things with the young, you know, youth of the country. So in any person's life, there are different areas, and especially when you are young, you are in college, you have to create a lot of balance in your life because you are into a transition phase where you are entering from education mode to a commercial world, and you are making yourself equipped, balanced in your life. And there is a hell lot of pressure if we all realize as a student, like pressure from college side, pressure from school side, pressure from friend side, pressure from your family side, and self pressure. You want to do something different, but somebody force you to do something different. So how to create a balance? And the best part is today's session is it belongs to all guys who are your background is mathematics. So mathematics is all about calculation. If we give a choice to anybody in life, what do you want to study, history or mathematics? So you just think about it. History or mathematics? History is gone. Past is past. We should aware about our past. But mathematics gives us idea, thought, how to calculate your present, how to make your future on the basis of your past. So mathematics is very interesting, and you all are fortunate to be a part of into mathematics. So there are basically four different areas which comes in any person's life, and today's session is more of centric to students. First area is you are in college and school, so you have to create a balance with your college requirements. What is the requirement and expectations of your professors from you? Second is you have to make your career in such a way that you are commercially successful in life. Maybe after 3 years, maybe after 2 years, maybe after 1 year. So you have to make yourself market ready, commercially and corporate wise. And the third is the balance, the area which is most important is your family, your friends, how to balance out all those things. And many of us, all students, professors, teachers, myself, we struggle during daytime, how to create balance. Friends बुला रहे हैं बाहर जाना है, but नहीं, there is a pressure, I have to do my assignment. नहीं नहीं तभी किसी रिश्तेदार का फोन आ जाता है कि there is a occasion, there is a party event, so I have to go there. So how to create balance? And the fourth area is time for self feel good, for self motivation, for self aim in life. So these things basically one person can struggle in these four areas of life, and if you are able to understand how to create balance amongst these four areas, then you will be successful, and people call you successful. So this is very, very important. These four areas we have to understand in life. What I understood after 30 years of my age, today I am 45. So after 30 years I have realized that this balancing is most important. We all know what is our background, what my father is doing, what is our heritage, family heritage. So we have to justify that also. We carry those pressures also. And the mantra to achieve our goal in life is to understand, to catch the signal of life.
our life is giving signals. If we are not doing something right, we get signal. हमारे mind में कहीं ना कहीं we get a signal. Oh, you are not doing this right. Please mind it. The repercussions of your action will be this. If we ignore, we have to compromise. If we catch those signals, we will be successful. So there are things in life which everybody is getting signals from self. So we have to make our system, our brain, our calculation in such a way that we should understand those signals. छोटा सा एग्जांपल है, खाना खाया डकार आ गई, but we are avoiding it. Body signal दे रही है, you are full, your need is full, so stop it. But we do overeating, and then finally जिम में जाना पड़ता है. So we understand. So same way our body is giving signal. रात को आइसक्रीम खाई, गले में दर्द हुआ. Body is giving signal. Okay, if you don't take care now, you will get fever, and then you will lay down for 3-4 days. So understand, but we ignore. And sometimes we catch those signals, we treat ourselves, we believe we do preventive health care, and automatically we are fine, we are good to go. So what I mean to say is, we should think about ourselves, our body, our goal, our aim, and we should catch those signals. So we are getting signals, so we have to sensitize ourselves, we should get signals. If we see, sometimes कोई जा रहा है और पीछे suddenly we turn because we get some signal in our body कि कोई ना कोई पीछे है. So same way we have to enhance our senses. That's the key, and we all can do it with exercise, with running, with meditation. There are a lot of ways, and we are doing it. But there are a lot of ways to get maharat in this, to get overcome all these things. So the next, what I feel is how you can create balance in your life if we understand our network, because there are students. This session is for students. We have to understand what kind of myth we have. Myth means what kind of friends we have. So that is very important. We all know professors, principal, and all seniors. They understand what kind of friends we should make, and slowly, in fact, in our school days also, our parents, our mother, our well-wishers, they keep telling us किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए हमें. So what I have realized, what I have learned from my guru is, there are 5 type of friends. 5 तरह के मित्र होते हैं. हमें उनसे बच के रहना है. हमें देखना है कौन सा मित्र हमारे काम का है, कौन सा मित्र हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और हमें किस डायरेक्शन में जाना है. What is my aim, and where I am dragging myself, where I am allowing myself without distraction or with distraction. It all depends on your company. बचपन से सुनते थे क्लास में, आज भी सुन रहे हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर दी है. संगति का असर आता है. So back to basics पे काम करते हैं. What I have learned in life after before 5 years is basics. Truth कभी change नहीं हो सकता, and we should always follow. If you want to be extraordinary, if you want to be outstanding, if you want to be number one, then don't lose your basics. And basics is what? Basic is sachai, truth. Basic is love. Basic is sharing, giving. So mitra बड़े important है life के अंदर. And we spend most of the time, especially at your age, students, where we spend most of the time with our friends, not with our family members. So first type of mitra is a tali mitra, जो आपको देखता है और आपके लिए ताली बजा देता है फटाफट. वाह वाह, बहुत बढ़िया इशिका, बहुत बढ़िया दीपांशी, बहुत बढ़िया स्वाति, बहुत बढ़िया प्रिया. You are very good. So we have to understand what kind of mitra is this. Is he or she is really motivating me? If he or she is really distracting me, कि मैंने कुछ किया भी नहीं है बट मुझे चढ़ाना है या फिर मुझे डिफ्यूज करना है, यानी कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है लाइफ के अंदर. सो एक ताली मित्र होते हैं. दूसरे मित्र होते हैं गाली मित्र, जिनसे कभी भी मिल लो, they always talk shit. So we should avoid those kind of mitras, and we all are surrounding with these kind of mitras in life. And third mitra is your thali mitra. Thali means your plate, food, platter.
हम बैठे हैं मिलके किसी के साथ खाना खा रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, गिविंग कर रहे हैं. तो थाली मित्र इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, लंच ब्रेक होता है, वी कीप शेयरिंग आवर फूड विद ईच अदर. सो दोज आर आवर थाली मित्र. And the fourth mitra is your pyali mitra. We should beware with these pyali mitras in life. जिनको कोई काम नहीं है, केवल डिस्ट्रैक्शन है. चल यार पार्टी करने चलते हैं, छोड़ ना एक और लगाते हैं, छोड़ आज ये बहाना बना देते हैं. So we all are surrounded with these kind of friends. Even I, even myself, we have these kind of friends. So we should beware with all these kind of pyali mitras, because we are into a phase now. We have to create our very strong, solid foundation to become successful into commercial and corporate world. We should be market ready. If we see current scenario in India, there are a lot of opportunities, because we are running an institute which is a part of NSDC, National Skill Development Corporation. So before COVID time, we used to participate in all kind of job fairs where young participants, graduates, BTechs, BE, all those guys, they come into those job fairs to get the job. And you won't believe, in a 3 days job seminar, there are more than 50,000, 1 lakh, young guys who are looking for employment. And the sad part is, there are a lot of vacancies, but they are not market ready. There are a lot of vacancies, but they are getting rejections. Why? Because their basics are not correct. What kind of basics? And you will be shocked to listen. There are more than 60% students who are BTech. They are engineers. And we understand in last 7-8 years what kind of development in engineering field our country is doing. It is big time. In last 70 years, things are not happening which are happening now. Big highways, big plants, big machineries, big manufacturing units everywhere. So in all sectors, but we are not market ready. A BTech student is not aware of what is E is equals to MC square, who is Einstein, who is Newton, what is first law, second law, third law, we don't know. So how can an industry give the opportunity to those guys? So what I need to say is, we should understand what we are doing in life and how we are doing in life. What I have learned in my life, रटने से कुछ नहीं होगा, go with the logic. Logic आता होगा, you can do anything in life. Logic. And logic has to be right. Logic has to be like really logical. So the fifth mitra, which is very important in life to become successful, is your Mali mitra. Mali, gardener. हम सब ने your knowledge, whatever, it will never reduce. You tell me anything, or you introspect yourself after this session कि मेरे पेरेंट्स ने कभी कोई चीज डोनेट करी तो उनका क्या काम हुआ, या मैंने कभी किसी को कुछ सिखाया, कुछ भी नॉलेज, कोई फॉर्मूला मैथ्स का, कोई क्वेश्चन रिजॉल्व किया, या कुछ लॉजिक किसी को सिखाया, बताया, तो क्या मेरी नॉलेज कम हुई? So it is never happening in life. So if you want to achieve something, you have to start giving. So sooner you understand this, sooner you become successful. So sharing is the only mantra which you should learn, you should discuss amongst your friends, and surround it with your Mali mitras who can really आपके अंदर खाद भी डालें, पानी भी डालें, और आपको फ्लोरिश होते हुए देखे, आपको प्रॉस्पर करे, आपको टोके. आज हमें बड़ा बुरा लगता है if somebody हमें टोकता है. नो, पेरेंट्स की बात हमें बड़ी अजीब लगती है, प्रोफेसर्स की बात हमें अजीब लगती है, but that they are your well-wishers. Your parents are the first near to you, who are the most concerned about your well-being. So we should listen to our parents, and generation gap will always remain. आप भी बड़े हो जाएंगे, you will automatically realize the way I realized after 34 years of age. एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, बुक्स में पैसा पड़ा हुआ है 4 करोड़ रुपए, मार्केट आउटस्टैंडिंग. माय फादर इज से ऐसे पैसे का क्या फायदा जिसको हम यूज ना कर सके. उस टाइम समझ में नहीं आता था
कि जो अपने पास है वही अपना है. What my father wanted to teach me is पैसे की रिकवरी करना सीखो. बिजनेस करना ही सब कुछ नहीं है कि ऑर्डर ले लिए बड़े बड़े और ऑर्डर सप्लाई कर दिए और आउटस्टैंडिंग रखी. There has to be some rules and regulations. Whatever you have with you is yours. After certain time, you should demand your money. You should make your system so strong that you can recover your money. Otherwise, there is of no use. वो बात मुझे तब समझ में नहीं आती थी, but yes, I realized this after 35 years of my age कि पैसा जरूरी है. Once you want to do expansion, so what happened? CA books में बताते हैं कि you have that much of money reserved in your books, which you have to ultimately recover from the market. But it's very difficult sometimes. जब चीजें हम छोड़ देते हैं तो जाती हैं, वो वापस नहीं आती हैं. तभी हम कुछ ना कुछ उस कैलकुलेशंस डालते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. देयर आर सम bad debts, bad losses, 10%, 20%, maybe 5%. So it depends on your working style, how you do it. So important is what? The sooner you realize who are your well-wishers, your parents, your gurus, they are your well-wishers. Because आप बन जाएंगे, आप कुछ level achieve कर लेंगे, so they will be the most happiest person on earth. Your parents, your guru. आपके स्कूल में जो परफॉर्मर्स रहते हैं, जब टॉप नंबर पे आते हैं amongst other universities or other colleges, so automatically आपके प्रोफेसर्स का, आपके प्रिंसिपल्स का, they feel pride. These are my students. That is their feel good. Try to understand. So they will give you their best. They will give you their bestest to make you best. So we should listen our Mali Mitras. They are in any form. Maybe your principal, maybe your professor, maybe your parents, maybe your friends, maybe your brother, sister, elder, younger, whosoever. So we have to understand कौन हमारे हित की बात कर रहा है. Who is talking about my interest? Who is grooming me? So we should learn this. We should recognize. इन पांचों तरह के मित्रों में हमें रियलाइज करना है हमें किसके साथ रहने में मजा आता है. कौन हमें एक सही डायरेक्शन में without distraction, who can groom us in a better way? Who can groom us? So I always quote, one example. So one is, दिवाली की हवाई जो हम जलाते हैं जो ऊपर जाती है और स्काई में जाके ब्लास्ट करती है. And second is a missile which is guided. The guided missile knows his target, where should fall and where should damage and achieve the aim. But a Diwali missile may be power hoti hai. It also goes up. It also do damage, but it is not guided. Direction nahi hoti hai uske andar. So students, we have to understand who is guiding us. We want to be a successful, missile जो अमेरिका या कोई भी एक कंट्री उसको यूज करती है. हम लोग भी इंडियंस भी ऑल्सो LOC सबको कंट्रोल करने के लिए भी ऑल्सो हैव गाइडेड मिसाइल सिस्टम. वी वांट दैट सिस्टम वेयर वी शुड अचीव आवर एम इजीली. और वी वांट टू बी अ दिवाली मिसाइल, दिवाली हवाई जिसको छोड़ते हैं जो जाती तो है बट पता नहीं किसकी विंडो में जाएगी और कहाँ डैमेज करेगी. डैमेज वो भी करती है, पावर उसमें भी होती है, वो भी ऊपर जाती है. सो इट इज अप टू अस कि व्हाट काइंड ऑफ सराउंडिंग्स वी वांट. वी वांट अ गाइडेड सराउंडिंग हु कैन रियली गाइड अस. सो दीस आर 5 टाइप ऑफ मित्रास. आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू. I just because it's a one-way communication mode today, so you make your points, you introspect yourself, and you think, you keep yourself into this situation and think about it. Definitely you will get the way, because ultimately it is your life, your aim, your calculations, and everybody's calculation is different in life. So somebody is having short aim, somebody is having long sightedness. For example, because we are into auto, we are car dealers, and the last 25 years after doing my engineering, I spent my time, most of my time into auto industry. तो गाड़ी चलाना बड़ा interesting है, and many of us, all of you, many of you know how to drive. Or just recall those moments when you were learning driving.
कोई ऐसे बैठता है स्टीयरिंग के ऊपर, आगे से बोनेट ना लग जाए, कोई थोड़ा पीछे होके बैठता है कि मुझे ड्राइव करना है, कोई बिल्कुल बैक साइड पे होके बैठता है, कोई 2 हाथ से चलाता है, कोई सिंगल हाथ से चलाता है. वी ऑल नो दिस थिंग, राइट? सेम वे हमारी लाइफ भी है. So it depends on us how we make our life balance through our own calculations. भाई जो ऐसे चला रहा है उसकी भी तो कोई कैलकुलेशंस है ना, कि मेरी बम्पर ना लग जाए, मेरी लाइट ना लग जाए, मुझे आगे का दिखना चाहिए, बड़ी सारी चीजें होती हैं. We keep, once any new car is launching in our showrooms, so we keep taking feedback from customers. कई customers बोलते हैं गाड़ी तो बहुत अच्छी है, seats are very comfortable, but I am unable to see my bonnet. गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, but I am unable to see the right side of my fender, जहाँ indicators और light लगी होती है. So it depends how we are driving ourselves, how we are learning, driving, all those things. Just recall those moments. जब हमने किसी learning institute से या किसी हमारे घर well-wisher ने हमें गाड़ी चलाना सिखाया. So same way is our life. What is your aim in life? You want to drive like this, डर के कि आगे लग जाएगा bonnet. पूरे ड्राइविंग के टाइम पे प्लेजर तो ले ही नहीं पाऊंगा, because all my senses, all my systems are engaged to see road, bumper and everything. कब क्या हो जाए, और I want to drive comfortably, sitting, properly, adjusting my seat and then driving it. So it is up to us how we plan our future. So some people they make their dreams, or they do calculations for their life. Like after 1 year I have to do this. After 5 years I want to see myself on there, some different platform. After 20 years I want to do this. And at the age of 50 or at the age of 60 I want to do this. What is all this? This is all driving your life, your career. So define in a very balanced way. It is all about calculations, and nobody understands calculations better than a mathematics student. So make aims of your life. Take baby steps, no issues. Once you enter into a corporate world after your education is very important. I tell you, I did diploma in electrical engineering. Then I started AMI for doing my BTech. I passed out in 1998, and then I started job in one of the engineering company, very renowned company at that point of time. Very small company doing a turnover of around 30 CR. My first salary is 3,500 rupees. Why I am telling all these things to you is, it's a life case study. You can also learn from my good things or bad things or my mistakes and all those things. So what I understood is, when I introspect my professional or commercial journey of last 25 years, is after doing diploma, at our point of time, maybe professors they can also, or the principal they can also realize, once we finish our education we start thinking, we start planning which sector we should opt in life. Either we should go to retail chain, we should establish our career into insurance sector, or automobile sector, or training sector. There are a lot of sectors. So we know our interest area. We know what kind of background or what kind of capabilities and potentials we have, one individual have. So we opt our sector. So I opted, my sector is automotive. I'm very fortunate enough. Cars, automotive excites every age bracket. Whether it's a kid or a senior citizen or whosoever, you, me, and his age, cars, automobile excites everybody. Either it's a jet plane or a big, construction machine, or a fast, Ferrari or Aston Martin or a Maruti. It excites everybody. So I was fortunate enough. So what I taught from my parents, my gurus, my teachers, my school, my college is, whatever is coming to you, always accept with gratitude. Thank you.
Like I did my engineering, friends ने बोला चलो यार चलते हैं, तब उस टाइम एक पर्सनल नेटवर्क होता था. पर्सनल नेटवर्क इज an organization name जो कि it's a consultancy firm. That time it was a consultancy firm. I was not aware that today they are working or not. They were that point of time they were in Nehru Place. So I been there with my friends and we submitted our CV to them and paid a fees of I think 50 rupees that point of time that we are interested to do job. Please help us to get job. So I got a call. I still remember, I had a AMI exam, engineering exam, after doing my diploma. And in second half, it was an interview lined up in a company called Neptune Equipments. So I've been there in second half after doing my, exam. So I've been there and met with the regional manager. Regional manager, he was doing, some interviews and I was some 7th, 8th candidate over there. So just listen carefully. And I realized that, that was my changing time. That was my, positive reply to them, which I learned from my gurus and my parents. So he met me, he asked few questions, theoretical, practical, and then he selected me and he said, we are offering you, Harsh, 3,500 rupees salaries. And whatever you sell, I was into sales department, I love sales. And still I believe that I am a salesman only, who is selling, good thoughts. Currently also I'm selling my, best practices, good thoughts and learnings of life to all of you. Maybe they are beneficial for you. So he offered me this. I said, thank you, sir. He said, your conveyance is 1,000 rupees. I said, thank you, sir. And he said, okay, you take 5-10 minutes time and then get back to me. Are you ready for it so that we can, print your appointment letter? I said, okay, sir. I was sitting in a conference room with other candidates. Somebody is talking, यार मुझे उन्होंने 3500 रुपया बोला, मैंने बोला सर काम नहीं हो पाएगा. I need 6,500 rupees. तो उन्होंने मुझसे negotiate करके बोला, okay, we will give you 5,500. So somebody is saying, convince जो मिला मुझे, उन्होंने मुझे बोला 1,000. मैंने कहा सर possible ही नहीं है, petrol is so expensive. So इतने में तो नहीं हो पाएगा. Then he said, okay, we will give you 2,000 rupees. Then he said, okay. So मैंने बोला यार मेरे को तो उन्होंने 3500 बोला. मैंने कहा okay सर. उन्होंने मुझे 1,000 बोला. Okay सर. ये सब क्या है यार, मैं भी पैसा बना सकता था, मैं भी नेगोशिएट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है, हमारे टीचर गुरु ने यही सिखाया है कि भाई अभी तो तुम बच्चे हो, अभी तो कॉमर्शियली तुम्हें अपनी बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करना है. व्हाई यू आर रनिंग फॉर मनी? वेरी सिंपल. अगर हम सोचे तो बहुत कुछ है, ना सोचे तो बहुत कुछ है कि हर महीने इतने का लॉस है, मेरी वर्थ नहीं बनेगी, मेरी बैकग्राउंड नहीं बनेगी. So what I learned from that is, first create your base, make your foundation so strong कि ऊपर आपको कितनी भी बिल्डिंग्स बनानी हो, कोई भी रेनोवेशन करना हो, आपको फाउंडेशन पे काम नहीं करना पड़ेगा. So once you do work on your foundation, you will not redo any work on your foundation. And foundation, who creates your foundation? Your well-wishers, जो आपके माली मित्र हैं, आपके प्रोफेसर्स, आपके पेरेंट्स, they are your माली मित्रास. अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे और प्याली मित्र के साथ रहेंगे और खाली मित्र के साथ बैठ के तालियां बजाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में. So I still remember I worked for that company for 15 months only, and one day I got a call from one of my senior who was working in the same company, who left that company and joined somewhere else. He called me up, will you become our distributor for India? I was the first distributor for Ingersoll Rand. Ingersoll Rand is a Fortune 500 company. It comes in top 500 companies of the world. Very big company, American company, more than 100 years old company. If you see CNG pumps on Delhi, उसमें जितने भी pump हैं, which जो high pressure create करते हैं, they all are from Ingersoll Rand. They have a brand called Dresser Rand. Very big company, inventor of compressors, air compressors. Industries, हमारी गाड़ियाँ, हमारे टू व्हीलर्स, कुछ भी एयर प्रेशर के बिना नहीं चलेगा जब तक हम उसके अंदर ट्यूब के अंदर हवा नहीं भरेंगे. So that is that company. Because what I mean to say is opportunities कभी भी आपको नॉक करके नहीं आएंगी कि प्लीज आप मुझे ले लीजिए शालिनी, मानसी, बीनू, जानवी, मैं अपॉर्चुनिटी हूँ, रितिका, मैं अपॉर्चुनिटी हूँ, प्लीज ले लो मुझे, ले लो. नहीं आएगी कभी. Opportunity always come with a tension. Opportunity always come with a responsibility. Opportunities always come
with pressure. If we take that opportunity, those things, those tensions, those pressures, automatically we can convert it into opportunity. And then people will start telling you, Shalini, you are very lucky. Priya, you are very lucky. Yashoda, you are very lucky. Punita ma'am is very lucky. इतनी हाई पोजीशन में बैठी हैं. बट कोई रियलाइज कर रहा है कितना काम किया उन्होंने? कभी किसी चीज को मना नहीं किया, हर चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया. जब उसको एक्सेप्ट किया तो उन्होंने एक चीज अचीव करी. एंड बिलीव मी, सक्सेस कभी आती नहीं है, उसको पाया जाता है हार्ड वर्क से. एंड देन पीपल विल ऑलवेज टेल यू, यार ये तो लकी है. लक वक्त तो बात की बातें हैं, वो तो लोगों के लिए, थर्ड पर्सन के लिए. व्हाट इज इट इज योर हार्ड वर्क. What kind of input you are giving to your goals, your life, your aims, your objectives, what kind of calculations you are doing. So next is calculation. Calculation कैसे करनी है लाइफ की? Calculation करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है. कैसे आसान है मैं आपको बताता हूँ. Calculation के लिए अगर हम समझ जाए, हमारी बॉडी अंडरस्टैंड करे, हमारी सेंसेस अंडरस्टैंड करे, who are our माली मित्रास, calculation बड़ी आसान हो जाएगी. अगर हम अपनी लाइफ में किसी को अपना गुरु बना लें, किसी को अपना एडवाइजर बना लें, किसी को अपना मेंटर बना लें, किसी को अपना कुछ भी जो वेल विशर है उसको बना लें, और ऐसा नहीं मैंने बोला और आपने बनाना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली आप लोगों के आसपास सराउंडिंग्स में योर गुरुज आर देयर, योर गाइड इज देयर विद यू. फॉर एग्जांपल, वो गाइड, वो गुरु आपका रिलेटिव नहीं होगा, जरूरी नहीं है. वो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं होगा, वो जरूरी नहीं है. वो जरूरी नहीं है कि वो आपके पेरेंट्स हो, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो सकता है, बट वो आपके नेटवर्क में होंगे. सो मैं आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज ही कर रहा हूं विद एग्जांपल्स, सो दैट वी कैन रियली इंट्रोस्पेक्ट. जो चीज हमने, जितने भी आप लोगों की एज ग्रुप से ऊपर के लोग हैं, वो कुछ टाइम बाद सीख रहे हैं, आप लोगों ने सीखी है. वी ऑलवेज वांटेड कि हम अपनी गुड चीजों को अपने वेल विशर्स जो हमारे कंसर्न पर्सन है, लाइक टुडे you guys are my responsibility, I should deliver something good to you so that you can understand, you can grasp and you can implement in your life to become successful. Why I am doing this, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी चीज है. I am doing this because for my feel good. आपकी टीचर्स भी, आपके प्रोफेसर्स, आपके प्रिंसिपल, आपके पेरेंट्स भी जो कर रहे हैं अपने फील गुड के लिए कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया. इफ यू अचीव समथिंग, इफ योर कॉलेज अचीव समथिंग, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरीबॉडी, रिकॉग्निशन फॉर एवरीबॉडी, एंड दैट इज द रियल अचीवमेंट और रियल एम, accomplished aim of your professors and teachers. That is their mission actually. So guide हम बनाएं लाइफ के अंदर, और हमारे आसपास ही है, उनको रियलाइज करें. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं मेरे लाइफ के अंदर कौन गाइड है, तो मेरी लाइफ के अंदर आई हैव फ्यू एडवाइजर्स इन माय लाइफ हु आर ऑलमोस्ट डबल ऑफ माय एज. जब मैं 35 का था तब वो मेरी लाइफ के डबल एज के थे. मैं उनसे अंडरस्टैंड करता हूँ. एक छोटा सा एग्जांपल, आप किसी घर में कोई इवेंट होगा, शादी का टाइम चल रहा है, सगाइयों का टाइम चल रहा है, मेहंदी का टाइम चल रहा है. हमारे फैमिली में मदर साइड हो या पेरेंट्स साइड हो या फिर किसी की भी साइड में, जब हम किसी इवेंट में जाते हैं, किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, तो एक दो जने घर में ऐसे होते हैं जो हमें रोकते हैं, और प्रिया बेटा क्या हाल है आपके, हाउ इज योर कॉलेज इज गोइंग ऑन, अंजलि कैसी हैं आप, कितने मार्क्स है बेटा तुम्हारे मैथमेटिक्स में. हम में से कई लोग तो उन लोगों से मिलना चाहते हैं, कई लोग हम बच के निकलना चाहते हैं. वो फूफा जी देख रहे हैं, नमस्ते करो, कट लो. ओ मौसा जी पकड़ लेंगे, अभी क्या चल रहा है स्कूल में, तेरा फ्रेंड क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या बनना चाहते हो लाइफ में, प्रियांशी, नित्या, कुसुम. होता है हमारे साथ. हम उन लोगों से बच के निकल जाते हैं. दे आर आवर वेल विशर्स, दे आर अचीवर्स इन लाइफ, जिनको पता है कि अच्छा, वो आपसे क्यों पूछते हैं, आपने कभी रियलाइज किया आपके घर में और बच्चे भी होते होंगे, 8-10 बच्चे होंगे, एक दो से पूछेंगे. वो उनसे पूछते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जिनके अंदर उनको पोटेंशियल दिखता है. बट हम उनसे बच के निकल जाते हैं कि यार अभी पकड़ लेंगे यार, अभी बताना पड़ेगा यार. वो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है ना. चलो एनीवेज, मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ. आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करना, सोचना. मेरा केवल कहना इतना ही है, इन लोगों से कभी अलग से नहीं जाना चाहिए, मतलब इन लोगों से मिलना चाहिए. दे विल ग्रूम अस, दे आर आवर माली मित्रास. तो ऐसे ही था मेरे केस में.
मेरी सिस्टर की मैरिज थी और उससे पहले मेरे जीआई के यहाँ कोई फंक्शन था, तो जो उनके फादर थे, ही वाज डायरेक्टर बीआईएस, भारत मानक ब्यूरो, आईएसआई जो होता है, उससे वो रिटायर्ड थे। उन्होंने 3 बार EMI करी थी, उसके बाद उनको एक डिग्री मिली थी MIE something. So he was also a diploma holder. So he was telling me his feelings. उन्होंने मुझे बोला, हर्ष बेटा क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं अभी 12th में था, 12th की बात है। So I did diploma from Pusa Institute. One point of time it was biggest polytechnic of Asia, very renowned. वहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ भी एंट्रेंस से आता है, हॉल में बिठाते हैं, फिर बताते हैं कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। पूसा इज वन ऑफ द रेप्यूटेड वन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो इट इज वेरी सैड कि लास्ट 20-25 इयर्स हमारी गवर्नमेंट ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया स्किलिंग के ऊपर। ITI जो होती थी स्किलिंग, जहाँ पे हाथ से हुनर काम सीखते थे, उन सबको बंद कर दिया। प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हाईवे पे, जहाँ के प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको बता ही दिया, बीटेक बीई किस तरह के, जिनको यही नहीं पता न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, व्हाट इज E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, दे डोंट नो E स्टैंड्स फॉर व्हाट, M स्टैंड्स फॉर व्हाट, C स्टैंड्स फॉर व्हाट। They are not market ready. So we have to market ready because we all want to sensitize you. We are sensitizing you. आज हम जो बात कर रहे हैं, आपके जो कॉलेज का इनिशिएटिव है, we all are making you feeling sensitized that once you enter into commercial world, किन चीजों का ध्यान रखना है। Don't run for money. Make your base strong. पैसे के बारे में बात करेंगे 2 साल 3 साल बाद, जब साक्षी सीख जाएंगी कि उन्हें किस जगह अपना करियर एस्टेब्लिश करना है, क्या नॉलेज लेवल मैंने एक्वायर कर लिया है, और उसके बाद मुझे ऑटोमेटिकली मेरी वर्क बनेगी। देन लक्ष्मी जी विल फॉलो ऑल ऑफ यू, बिलीव मी। कीप योर एथिक्स राइट, कीप योर प्रिंसिपल्स राइट इन लाइफ, फॉलो योर ओन रूल्स विच यू डिफाइन फॉर योरसेल्फ। वो रूल्स बेसिक के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। व्हाट इज बेसिक? कि इफ आई अचीव समथिंग इन लाइफ, I have to share knowledge, skill, or whatever way I can support, help anybody, I have to do it. These are the basics. वही आम लगेगा तो ऊपर नहीं जाएगा हवा में, आम लगेगा तो नीचे आएगा, ताकि लोग उसको खा सके, उसको अप्रिशिएट कर सके और बोल सके फलों का राजा है। और हम सबको भी आम में बड़ा स्पेशल आम बनना है, नहीं तो आम तो फिर चूस के लोग फेंक ही देते हैं, बाद में गुठली बचती है खाली। We all are Alfonsos. हमें अपनी वर्थ बनानी है, हमें बैलेंस क्रिएट करना है, वो हम खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर गाइड माली मित्रा। सो मेरे वन ऑफ द गाइड इज माय जीजा जी, इज माय ब्रदर इन लॉ फादर। ही पास अवे, बट उन्होंने मुझे बोला, हर्ष तुम डिप्लोमा कर रहे हो बेटा, कभी घबराना मत, अपने आप को ITI और बीटेक के बीच में हमेशा तुम पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट फीलिंग करोगे, ना तो मैं बीटेक हूँ ना मैं ITI हूँ, ये फीलिंग आएगी आपके मन में। बट वंस यू एक्वायर नॉलेज, वंस यू एक्वायर skills, then automatically you will be above those guys. And currently, BTechs, these guys are working under me. But I realized at the age of 37, 36, I still remember that education is must. जितनी पढ़ाई आप कर सकते हो उतना करो। कॉमर्शियल वर्ल्ड में जितना लेट जाओगे, इट इज ऑलवेज बेटर, इट इज ऑलवेज बेटर। अचीव योर ड्रीम्स। कहाँ पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, कहाँ जाना है। इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंपल्शन की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या जो भी है, फैमिली सर्कमस्टेंसेस हैं, सो आई हैव टू डू जॉब, आई हैव टू अर्न money for whatever for my family, so that is a separate thing, but then you have to give extras. क्यों एक्स्ट्रा की बात करते हैं? Why our country is after 2 years of COVID pandemic time, still we are the winners. डेली कोई ना कोई बड़ी चीज अनाउंस कर रही होती है हमारी गवर्नमेंट, डेली कोई ना कोई कॉर्पोरेट ग्रुप बड़ी चीजें अनाउंस कर रहा होता है। I did 6 big expansions after COVID first wave. Why automotive sector is doing great, except hospitality? I think none of the sector who is struggling. Everybody is giving extras because everybody knows कि 12 महीने का काम 8 महीने में करना है। 4 क्वार्टर होते हैं 3 months के, so 1 quarter is gone for lockdown, pandemic, coming back to track, and we have to cover up everything in 3 months, 3 quarters. Same is your studies. Classes नहीं हुई ऑनलाइन में, मन नहीं लगता या कनेक्ट नहीं क्रिएट हुआ या क्रिएट करने में it takes lot of time.
but we know where we are dragging. कुछ तो टाइम निकाले, and we all know दिन में हम 1 घंटा 2 घंटा भी देंगे तो that is good to go. But वो 2 घंटा डेडिकेटेड मतलब फुल पैशन के साथ, फुल डायरेक्शन के साथ, फुल एम के साथ होना चाहिए डेडिकेटेडली. सो गाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो मेरे गाइड थे जो मुझे रोकते थे, मुझे टोकते थे, क्या कर रहे हो, कितने मार्क्स आए, इतने कम क्यों आए, और बाकी मेरे जो भाई बहन थे वो पीछे से निकल जाते. सो इस तरह के गाइड्स हमारी सबकी लाइफ में है. सो वी हैव टू जस्ट सिंपली आइडेंटिफाई, वी आर सराउंडेड विद व्हाट टाइप ऑफ गाइड्स. मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो गाइड आपके ब्लड रिलेशन में हो. मेरे अपने ब्लड रिलेशन में कोई भी मेरा गाइड नहीं है. यस, गाइड, गुरु, these are different things. I call my mother as a guru, and we all call our mothers as our guru. बचपन में पैदा उन्होंने सिखाया है हमें, बड़ा उन्होंने ही किया है. They are our gurus. हमारा ब्रेन उन्होंने डेवलप किया है. सो हमें बड़ी सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है. और हमें आफ्टर once we complete our studies, education is very must. So like I realized after 37 year of age that education is must. थोड़ा और पढ़ लेता तो और अच्छे से बोल लेता, थोड़ा और पढ़ लेता और different platform पे चला जाता. But after 40 I don't think that is problem with me now. But yes, there was a time when I was realizing this. So my request to all of you is, please complete your studies well, in a good way. जो भी आप करना चाहते हो पहले वो करो, then enter into a commercial world. And once you enter into a commercial world, please don't run for money. Initially 2-3 years, create your base. If somebody is having their own family business, don't go into family business. That is my suggestion to you. Rest is up to you. If you are not compromised, if you are not pressurized, if you have no compulsion to go into your family business, don't go. Do job for a year in any company which is having a turnover of less than 40-50 crores. Don't do a job in any company which is having more than 50 crore of turnover. Why I am telling you this? If you go to a small company, you will learn all areas. If you go to big companies like IBM or maybe whatever you call Wipro, IBM, TCS, you will learn a lot of things. But only a particular job you are doing, only a particular skill set you will achieve. Those are also doing brilliant things. Those guys are also doing. But then you have to develop those multitasking, multi-dimensional thinking, multi-understanding kind of qualities within you. Else, you will keep doing only single kind of thing. You should become, a multiple. So we have to be, like whatever we do, we should do right at first time. Again, I am coming back to your calculations. If you want to create balance, what is balance? If you see balance, कैसा होता है तराजू? दोनों चीजों को बैलेंस करना. जब कभी कोई चीज नीचे जाती है तो we have to add something on the other side so that it will become equal, it will be balanced. So same way is our life. We don't have time to redo. Yes, we should learn from our mistake. But कोई काम ऐसा नहीं करता सोच के कि मुझे गलती करनी है, मुझे रीडू करना है. हम सारे काम करते हैं कैलकुलेट करके कि हमें अचीव करना है फर्स्ट टाइम अपना ऑब्जेक्टिव. So we have a terminology in our automotive which is called FRFT. First right, first time. We keep telling our principal companies, Kia, Tata, other brands, they keep telling us to our managers in workshop, technicians, do right job at the first time. Customer will not give you a second chance. If he is giving his car for servicing, do it at the right time. Understand his problem there and then once you are receiving the car. Mileage issue है, braking issue है, suspension issue है. Life के भी तो ये issue है ना. कभी शॉकर आ जाता है, कभी गड्ढा आ जाता है. We have to put brakes and all those things. So FRFT, first right, first time. कैलकुलेशन सब उसी हिसाब से करते हैं. तो थोड़ा इंश्योर कर ले, अपने गुरुज की बात मान लें, अपने माली मित्रास को रिकॉग्नाइज कर लें और अपने बेसिक्स पे काम कर लें. और बेसिक्स इज we keep seeing status of many people on WhatsApp, back to basics. हम लोग भी शायद किसने लगाया होगा back to basics.
So these are the basic few mantras of life. So पहली बार में काम करें, ठीक काम करें और कैलकुलेट करके काम करें, इंश्योर कर लें, एडवाइस ले लें, घबराएं ना, डरे ना. There is nothing to lose. At your age, if you have good background, good education, good qualification, then there is nothing to lose. You know what is good for you. You know what is good for others. You know what is good for your family. You know what I have to drag my life, where I have to drive myself in my life. We all know. So simply note it down. So मुझे किसी से मैंने सीखा, if you are confused, if you want to take some call or something, some decision in your life, and you are confused, what should I opt? It is very simple. Take a plain paper, pencil, put one side plus sign, one side minus sign, and start writing whatever is coming in your brain in a bullet point form. Serial number 1. If I am doing this, this is the plus. If I am doing this, this is second plus, third plus, fourth plus. If I am doing this, then the repercussions and the negative part is this. Then write in the negative column. Last में बड़ा आसान है, जिसके ज़्यादा points बन रहे हैं, take that call. Maybe it is hard to believe, it is hard to do, it is hard to act, it is hard to digest, but that is right for you. Very simple. I request एक बार करके देखना आप लोग. You will really enjoy. Really enjoy. Problem is what? केवल एक पेपर उठाने की और एक पेंसिल उठाने की, एक पेन उठाने की. उसी टाइम तक प्रॉब्लम है. The moment you start thinking in your brain and writing down, you will learn this art of taking decisions and calls for yourself. And you are the best, driver of your life. You are the only driver of your life. It is all up to you. थाली मित्र चाहिए, गाली मित्र चाहिए, माली मित्र चाहिए, प्याली मित्र चाहिए. It is all up to you. It is all up to you what kind of guide, philosopher, gurus you opt. It is all up to you what kind of surroundings you want, what kind of calculation you do for yourself. We, your professors, we can only teach you. Your parents, they can only tell you. See, this is our background, beta. Parents ही तो बोलते हैं, see, this is our background. This is our financial strength. This is our, whatever circumstances, situation, background of a family. So do as per that. इसमें बहुत कुछ आ जाता है, aims आ जाते हैं. What is aim for your family? What is your family aim? Who is the best achiever in your family? Who is your iconic, who is your target to whom you want to surpass? Aditi, Manjari, Binu, who is your, achiever in your life, in your family? Maybe the father side or maybe the mother side. Who is your role model to whom you want to, surpass? And they will feel good. Okay, she has done it. Yogesh ne kar dikhaya, Sanskriti ne kar dikhaya. So people feel really happy, proud on you, your parents, your well-wishers, your Mali Mitras. So all those things. And there are certain tools also. How you can achieve, these things in your life, in your education, in your aim. There are tools also. And we all know, we all are doing, but just we have to realize why I am speaking all these things. Because I have finally realized I have implemented these things. I got success, so I am repeating, sharing, giving it to you. Same way we also realize, but we don't acknowledge that yes, if I am stuck in this situation, I have to do this. गाड़ी चला रहा हूँ, आगे रोड ब्लॉक आ गया, रोड बंद है, क्या करूँगा? रिवर्स गियर तो डालूंगा. We all know. We have to put a reverse gear. So that is, everybody, it's a universal truth. So same way we know कि हमें लाइफ में कहाँ ड्राइव होना है, क्या एम है और उसको पाने के लिए क्या टूल्स है, वो मैं आपको दे सकता हूँ. जो मैं आपसे शेयर ऑलरेडी कर भी रहा हूँ कि you should have your mentor, your gurus, you have to fully dedicatedly trust in those, all these guys. So ultimately they will help you to become or to achieve your goals in life. Same way. I started my company with a turnover of around 5 or 10 lakh rupees in 99. I have a VAT number. उस time VAT होता था, VAT tax होता था. Today it is GST.
I still remember 1st October 1998. After doing diploma, then 3 months of exam time, and then starting a job, first offer. I was selected with L&T during campus interviews, and Modi Xerox was one renowned name that point of time. But I have to do my studies, and I left job just for my studies. I got admission in MBA, IMT Ghaziabad. So we used to have class. Still remember, very great time. Student life is the best life in life. Even your principal professors and your parents and myself, we acknowledge all those things. पढ़ना सबसे आसान काम है. पेरेंट्स ने पैसा देना है, सारे रिसोर्सेज देने हैं, फैसिलिटीज देनी है, पॉकेट मनी देनी है, और हम वो काम भी ढंग से नहीं कर पाते. And after a few years, we realize once we enter into corporate commercial world कि यार वो नहीं मिला जो पाना था. जॉब मिलना आसान नहीं है if we are not market ready. और जब हमें जॉब मिल जाती है तो हमारे सपने होने चाहिए. स्टार्ट डूइंग डे ड्रीमिंग, एक्चुअल डे ड्रीमिंग. जो मैं पहले बोल रहा था, 1 साल के गोल बनाओ, 5 साल के गोल बनाओ, 10 साल के गोल बनाओ, 20 साल के गोल बनाओ, और भूल जाओ उनको. जस्ट कीप इट साइड and start following your first aim, which may be 1 quarter, which may be today's goal after this session. I have made all these points I have to implement in my life. कुछ अच्छा मिलेगा तो 3-4 दिन आपको फील आएगा, but again in those next coming 3-4 days you have to make another feel good or another guide philosopher who can really guide you for life. और कुछ दिनों बाद ये हैबिट हो जाएगी आपकी. जो होता ही है ना, सुबह उठना था, मन नहीं करता. इट्स वेरी पेनफुल इवन फॉर मी, स्पेशली ठंड के टाइम में. बट वंस वी स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर 3-4 डेज ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन्स आते हैं, फील गुड आता है, मजा आता है. वाओ, फिटनेस हो रही है, बॉडी और फिट हो रही है, नेटवर्क बढ़ रहा है. वंस वी डू वॉकिंग, पीपल, आवर नेबर्स, एवरीबॉडी इज सीइंग, ओह वेरी वेरी फिटनेस फ्रीक, very smart, very fitness freak. यार सुबह करते हो वॉक, मजा आ जाता है यार. People start appreciating. That gives us a feel good. But starting में क्या था? पेन, सुबह उठना पड़ेगा, अलार्म लगाया, जगा नहीं. Once we win ourselves, once we invest ourselves for initial 3-4 days, automatically सब feel good में convert हो जाता है. And then it's a responsibility कि हम उसको अपनी habit बना लें. It's very important. So tools क्या है लाइफ के इन सबको अचीव करने के लिए? Again I am talking very basics because I learned last 3-4 साल में केवल यही समझ में आया है, हर्ष बेसिक्स पे काम करो यार. पूरी जिंदगी बेसिक्स से स्टार्ट होती है. If we start sharing our feelings, our thoughts, automatically अचीव होगा. और वो आप अपने लिए कर रहे हो. Again I am reminding you, वो आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, once you share anything in life, either money to a needy person or a knowledge to a needy person, you will never be in minus. Note it down. You are always in plus, 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 plus. And you have to push others. That's what I'm doing. Almost last, almost 58 minutes I'm doing this. Pushing you. Sharing. It is only solution for getting. हम सब पढ़ते हैं, who is the goddess of education or knowledge? माता सरस्वती. बचपन में से इनकी प्रार्थना स्टार्ट होती थी, मॉर्निंग में जाती, आज भी आपके कॉलेज में होती होगी. तो वो ऋण, वो डेट आपके ऊपर है, वो मेरे ऊपर है, मुझे उतारना है भाई. वो आई एम डूइंग इट फॉर माय ओन फील गुड. डेट तो मुझ पे ही है ना. दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग बाय दिस थिंग्स. आई लर्न दिस फ्रॉम माय स्कूल, वेयर आई एम प्रभारी फॉर 2 schools. From where I passed out, my students, those students, I passed out in 1994, 12th. आप में से कहीं तो बर्थ ही नहीं हुआ, किसी का भी बर्थ नहीं हुआ उस टाइम. So once I go to that school is feeling proud of me. I am getting a feel good from once I enter into my school. कि बचपन यहीं से निकला है, फाउंडेशन यहीं से बनी है, वहां से सीखा है. सरस्वती माता का ऋण आपके ऊपर है, जिसको आपको उतारना है. आप किसी पे नॉलेज देके, किसी को डोनेशन देके एहसान नहीं कर रहे हो.
आप आज बन गए हो, आपको दूसरे को भी बनाना पड़ेगा. Either that guy belongs to your family, your friend, your network, or any third person. So we have to learn this. So I have learned this very well, very well. Imandari is always 100%. It is not 99.99999%. I learned this 3 years back. कई चीजों में हम कर जाते हैं ना. No. Honesty is always 100%. It is not even 0.00 fraction of whatever. You are from mathematics, so you know those calculations. 100 पे सेंचुरी बनती है. Master Sachin Tendulkar. Why entire world put master in front of Sachin Tendulkar? Because उसने अपना काम बड़ा डेडिकेशन से किया. He knows what ball how to handle. हमारी लाइफ में भी तो बॉल सी आ रही है ना. यॉर्कर हो, बाउंसर हो, कैसे हैंडल करनी है. He is a master. Why he is a master? Because he practiced a lot. He practiced a lot in life. So he knows how to handle the situation, how to handle the ball. And today entire world is calling him Master Sachin Tendulkar. He is an ordinary guy. शायद 10th पास भी नहीं है. But physical stamina, dedication, goal in life, coaches, सेम में हमें ही बनना है. तो ऋण हमारे ऊपर है, हमें उसको देना है. And the second tool is believe in 3H. बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, हमारे गुरु ने सिखाया कि यार हर चीज लाइफ में, पेरेंट्स तो बोलते हैं ना, हर चीज लाइफ में बेटा पैसा नहीं है. कई बार हम देखते हैं, our parents, somebody cheat them or somebody, they make some losses in any of the way. So we keep telling them, पापा आपने गलत किया. Why you have done this? देखा उसने आपको बेवकूफ बना दिया. What is this? Because we are thinking with the heart. So 3H is what? Heart. And below heart what we have? Hands. And above heart what we have? Head. So I learned this from one of my teacher in the school. Is हम हमेशा सिंक्रोनाइज करें अपनी इन तीनों चीजों को. मैं हाथ से इतना काम ना करूं कि मैं मजदूर बन जाऊं. मैं हाथ से इतना काम ना करूं कि मेरा शरीर घिस जाए. Because ultimately it is a machine. We keep telling this to our mother कि माँ इतना काम क्यों करती रहती हो, एक मेड लगा लो यार, एक कुक लगा लो आप. We keep telling to our parents, our well-wishers, जिनके हम well-wisher हैं, हम उनको बोलते रहते हैं for their care concern. Why only head? क्यों हम बॉडी को अपना वो कर रहे हैं बार बार. जो चीज हमारे दिमाग से हो सकती है, शॉर्टकट में हो सकती है, यही तो है ना. So it is a balance of all 3H. मैं दिमाग से ही सारे काम ना करूं कि मैं इतना कॉमर्शियल में आ जाऊं कि मैं अपनों को छोड़ दूं, अपनों को भूल जाऊं, अपने मुझसे दूर हो जाए. I also realized after, I tell you, I belong to a very renowned educational family in Delhi. My Dadaji was a Unani doctor. पुराने जो लोग हैं, आज तो गवर्नमेंट स्कूल का बुरा हाल है, but before 2000, there are a lot of renowned government schools in Delhi, जहाँ से IAS, IPS, IRS, bureaucrats, इस तरह की प्रोडक्शन, मतलब आउटपुट निकलता था, स्टूडेंट्स निकलते थे. Birla Senior Secondary School is one of them, which is in Kamla Nagar. The founder principal for that school is my grand Dadaji. शक्तिनगर नंबर 1, रूपनगर नंबर 1, ऐसे ही बहुत सारे मंदिर मार्ग पे बड़े सारे विद्यालय रहे. बट अनफॉर्चुनेटली ठीक है, जो भी सिचुएशन है, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर. जहाँ पे मतलब अल्टीमेटली इट्स आउटपुट कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो आई लर्न कि एजुकेशन तो बहुत जरूरी है, बेसिक्स पे रहना बहुत जरूरी है. पैसा इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. यस, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ. यू शुड हैव इट, बट यू शुड बी ग्राउंडेड. यू शुड नॉट लीव योर ग्राउंड. गुची अरमानी सब चाहिए, बट पैर जमीन पे चाहिए. दैट शुड बी योर एम. सोसाइटी को वापस देना है. दैट शुड बी योर एम. And you are not giving it for others, you are doing it for yourself. So think of your head. हर चीज कॉमर्शियल ना हो जाए, हर चीज में पैसा ना बनाओ कि 1 के 1000 कर दूंगा. बट हर चीज में वो चीज नहीं हो सकती. उस 1000 को बनाने के लिए am I doing something wrong with my own health? Am I doing something wrong with my own family? So we have to sensitize our senses in body
to sensitize ourselves कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. So balance of these 3H. दिल से सारे काम ना करूं. If I get emotional, I can do wrong also. ये तो मेरी दोस्त है, Aditi is my friend. So इसको मेरे को फेवर करना है. एक लिमिट होती है. You should not hamper others. So once you start learning the balancing of 3H, hand, head, and your heart, you will not do any kind of mistake in life. You will have, okay, maybe the third person will criticize you, you have done this wrong. But आपकी अंतरात्मा में, you have a feeling of, satisfaction. You don't have a feeling of guilt. So start learning how to create balance in life. Start catching signals of your body, your brain. एक और चीज मैंने अभी कुछ महीनों पहले समझी. The human brain is the biggest brain amongst many of animals or organs or वो सब चीजें. And human brain is a brain which takes a lot of time. If any one of you is below 18, still your brain is at a developing stage. बंदर का बच्चा पैदा हुआ, इमीडिएटली खड़ा हुआ, पेड़ पे चढ़ा या उसकी माँ ने उसको पकड़ा, उसने चलना शुरू कर दिया. हिरन गाय का बच्चा पैदा हुआ, इमीडिएटली गिरा, खड़ा हुआ और चलना शुरू कर दिया. इंसान का बच्चा पैदा हुआ, माँ की गोदी में है, 2-3 साल तक उसको केयर चाहिए, because brain is not developed. So we should eat healthy. तभी तो पेरेंट्स बताते हैं ये खाओ ये मत खाओ, but we believe in junk food. Why America having highest mortality death rate in COVID time? Why there is a hue and cry? Media is not showing, but data is coming. We have network, we have friends overseas. Why obesity? Why we are saved in spite of 140 crores? Because of our turmeric, हल्दी का दूध जो माँ पिलाती थी या recommend करते थे, our masalas, our basic things, our basic lifestyle, our DNA, actually our DNA. But are we really justifying our DNA? Are we enhancing qualities of our DNA with our good deeds? We have to introspect. The entire world is, following India. And you will realize, few of you must be realizing it. आज सबवे जो होते हैं यूरोप के, वहां पर सुबह ओम का उच्चारण हो रहा होता है. ISKCON is great example in front of you. Lord Krishna, how many followers they have pan India? Sorry, throughout the globe. So what I mean to say is back to basics. Balancing of 3H. So next tool is again one tool which is again very important, which I have realized. I am putting it to my all staff also. We have more than 450-500 guys with us who are working in different sectors. We are into automotive, we are into education, we are into healthcare now, we are into construction, and we are into engineering. Entire DTC depots, all yellow green buses, the red and green buses, oil filling is through our systems. We did it 6 years back. It is one of the best, finest system. Always believe in quality. No average. We all are extraordinary. We are Alfonsos. We have to give our best. We have to give our best. So that is my mantra of life. Whatever you do, just do number 1 position. Nobody remembers number 2 position. सचिन ने कितने मैचेस में 99 स्कोर बनाया, सचिन भी याद नहीं रखता. हम भी याद नहीं रखते. हम भी क्लैपिंग जो करते हैं वो 100 पे करते हैं. So believe in excellence. होता है नहीं होता, that is separate thing. But at least we should, run for number 1 position with the right ethical way, with a proper calculated way. And we are from mathematics background, so we know calculations, what is good for me, what is bad for me, because we know paper पे लिखना है plus minus, last में अपने आप x-ray आ जाएगा if I am in doubt.
भाई शक ही तो होता है हमें, शंका ही तो होती है, उसी से तो हमें डर लगता है। यही बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। I'll take another 5 minutes, then I 6 minutes, then I wrap up this session. Maybe कई लोग बोर हो रहे होंगे अभी इन सब बातों को सुनने के बाद, बट माय ऑब्जेक्टिव इज कि आप लोगों को इन सब चीज़ों से फायदा हो, बिकॉज वी आर गिविंग यू योर प्रोफेसर्स, योर प्रिंसिपल, योर कॉलेज इज गिविंग यू प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट जूस, नॉट मौसमी। हम आपको सब जूस सर्व करना चाह रहे हैं, तभी आपको सारी बातें बताई जा रही हैं। मौसमी मार्केट जाना पड़ेगा, लानी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, घुमाना पड़ेगा, जूस निकालना पड़ेगा, फिर मिलाना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा, इतना काम। भाई हमने अगर कुछ कर लिया है, अगर हमारे पास जूस रेडी है, तो वी आर हैप्पी टू सर्व यू ऑल जूस काइंड ऑफ जूसेस। सो जूस इज ऑलवेज बेटर। बाली मित्रा जूस देता है हमें, ये मत कर यार, दिक्कत हो जाएगी, समझ। गाइड हमें हमारा वही करता है, हमारा 3H हमें वही सिखा रहा है कि यार जूस है, ये सब हमें जूस की तरफ लेके जा रहे हैं। सो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज if you follow your basics, if you follow your aim, your dreams. So conservation is very important in life. And the first part, if we talk about conservation, if I tell you, which I have learned, is money. Saving, conservation. And we all realize in the last 2 years, every one of us compromised on our cash reserves. The source of income थी वो भी कम हो गई, कईयों ने बढ़ा ली है अपनी। ग्रेट एग्जांपल है मिस्टर रतन टाटा। कोविड हमारे यहाँ कब आया? दिसंबर, जनवरी 2020। वर्ल्ड में कब आया? अक्टूबर 2019। बहुत रियलिस्टिक आपको एक फिगर देता हूं मैं, ट्रू। दिसंबर 2019 टाटा मोटर्स सोल्ड 8,000 समथिंग 9,000 कार्स पैन इंडिया। और मैं आपको अभी एक लास्ट मंथ की फिगर देता हूं। आफ्टर 2 years, exact after 2 years, last month they did 40,000 cars passenger. Why? How? Because their foundation is so strong. Because they donated 1,500 crores to PMO fund for COVID. गिविंग भी आ गया, फाउंडेशन हमारी स्ट्रॉन्ग है, टफ टाइम आया, निकल भी गया, ग्रोथ ही ग्रोथ है, प्लस ही प्लस है। वेरी ग्रेट एग्जांपल। आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय प्रिंसिपल कंपनी टाटा मोटर्स। We did expansion, 6 big expansions. We entered into healthcare and wellness, which is first time in India. People are themselves acknowledging this is first time in the world. I have not realized that whatever I am creating, it is first time in the world. Preventive healthcare for 0 to a senior citizen under one roof, everything under one roof. Pharmacy, physio, chakra, siddha, all therapies, sound, consultation, cafe, 50 top brands which are into healthcare, pathology, trainings. Why our youth want to become a bouncer? So is a yoga instructor is a respectable job, or a bouncer standing outside a pub is a respectable job? That we have to decide. Once we become something in life, we have to guide others. What your professors, your principal, I'm doing it. We want to be your rail ki patri. You are engine of your life. You have to drive your rail ki patri. Your this train. पटरी नहीं होगी तो ट्रेन तो चलेगी, गाइडेड नहीं होगी तो ट्रेन तो चलेगी और मिसाइल भी जाएगी, बट वो डैमेज करेगी ना। सो वी वांटेड कि हम आपके गाइड बन जाएं, और आप हमें जितना प्रेशर देना चाहो आप हमें दीजिए। यू टेक गाइडेंस फ्रॉम अस, you clear your doubts from us, and doubt is nothing. I will tell you the definition of doubt. Spelling of doubt is D-O-U-B-T. Right? So doubt is what? Dangerous opinion, unnecessary, bringing terror, trauma, tension for self. It is nothing.
वो सब माइंड में चल रहा है, ये आज मैं लेट हो गया, देख आज घर पे ये होने वाला है, डाउट डाउट डाउट। अगर मैंने उसी टाइम फोन कर दिया होता कि हे मॉम, आई स्टक समवेयर, so I'll reach in another 30-45 minutes or 1 hour, please, this call is just to make you, you know, informed that I'm okay and I'll reach home by this time. So doubt ही नहीं होगा, दिमाग में भी नहीं होगा. So unnecessary we are bringing terror, trauma, tension for self. जब वो डाउट हो जाता है तो फिर डरने लगता है, यार अब तो फंस गए घर पे जाके, इसको भी मैनेज करना है, उसको भी मैनेज करना है, भाई को भी संभालना है और बहन को भी संभालना है और पेरेंट्स को भी संभालना है, फादर को भी संभालना है. फिर we will start doing calculations. That is the best part because we belong to mathematics, so we start doing calculations, very good calculations. तो हमें डर लगता है, डर भी कुछ नहीं होता. It is all about information, genuine feeling, genuine remarks. So what is fear? Fear is nothing else than FEAR, false evidence appearing real. झूठे प्रमाण लगते हैं सच्चे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, उसी को दे के मैं अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी अपने को डिप्रेशन में लेके आ रहा हूँ. अरे स्टार्ट बिलीविंग इन एक्शन, स्टार्ट इट, डू इट. Once we start action, automatically things will fall in place because somebody somewhere is guiding us. हमारे माली मित्र हमारे पास बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें अच्छी बातें सिखाई है, हमारे पेरेंट्स ने हमें अच्छी बातें सिखाई हैं. They are guiding us. God is there to guide you. If you do something good, automatically हम सब सुनते हैं रोज व्हाट्सएप पे सुबह ढेरों भर के ज्ञान आता है. मैं भी कब पिछले 1.25 घंटे से आपको ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहा हूँ, बट कितना मैं रोक पाता हूँ, that is up to my heart, my learning. And once we learn, automatically अलर्ट आता तो अर्निंग शुरू हो जाएगी. So learning, education, qualification, your background, your foundation is very important. Start believing in conservation. पैसा जोड़ो, पैसा जोड़ना is बहुत important है. तभी तो लोग बोलते हैं इस तेरे पास तो पैसा है इसलिए तेरा दिमाग चलता है. बिल्कुल चलता है भाई, पैसा नहीं होगा तो दिमाग कहाँ चलेगा? पैसे से तो दिमाग चलता है. अरे 99% टेंशन खत्म हो जाती है अगर if you have money, if you have sufficient money. एक्स्ट्रा आ जाए तो अलग ही बात है. So we should start believing in conservation. That is very important. I have done it for myself into 3 parts. Immediate saving, जिसको मैं जो मेरे को अपने काम करने के लिए चाहिए for next 15 days, 1 month, 2 months, 3 months, 6 months. One saving is जो मुझे 2 साल के लिए चाहिए. If something went wrong, तो 2 साल तक मैं secure रहा. Third saving is for my expansion plans. I believe in my 3H, so there is no harm. So thank you so much. Thank you so much for this opportunity. I'm really grateful to the entire college, management and professor, especially thanks to Dr. CT for this opportunity and all the students for patient listening. It is one way. You have my details. If anybody needs any help in future, please do write me. And thank you so much. Thank you. Good afternoon, all. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for the event. I would like to thank Mr. Vashist sir for giving us his valuable time. Thank you, sir, for such an enlightening session. We all learned a lot from the knowledge and experience you shared with us and enjoyed the session. Thank you to our principal ma'am, Dr. Payal Mago, for providing us the opportunity to learn something new. Thank you, Dr. Punita Saxena ma'am, teacher in charge Department of Mathematics, for guiding us through to arrange such a knowledgeable session. And last but not the least, I would like to extend my thanks to our delightful audience for becoming a part of the session. Thank you. Thanks a lot, sir. I mean, it was actually an enlightening discussion that you had. And the way you said, it's absolutely true. We also try to imbibe this in our students, कि especially knowledge कभी बांटने से घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती ही है. So somehow these students have this mindset कि अगर मैं अपना क्वेश्चन किया हुआ एक दूसरे को दिखा दूंगी तो जैसे मेरे नंबर कम हो जाएंगे और उसके बढ़ जाएंगे. So this one lesson that you conveyed, I hope they are able to retain it in their minds. And you're absolutely right. I see my own kids shirking away from those relatives, who ask a lot of questions. But then I think they learn with time that they are actually your well-wishers.
So it was a life mantra that Sir has shared with us all. And I hope you are taking home, you are imbibing, his, just keep the keywords that he just spoke today in your mind. And, life would be easier to handle for all of you. So thanks a lot from all of us, sir. For sparing your time with us. So hopefully, if we are able to conduct something in a physical mode, definitely we'll invite you once again. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, girls.